अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हंची के टी। Today the topic that I have brought for you people to discuss is sentence and its types. I hope you people would enjoy this video. आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। What is a sentence? Before sentence we must know that what is a word. Word क्या है? ये combination of letters है जो कि ये combine हो जाए like A, B, C, D, E, F ये combine हो जाए तो ये word form करते हैं। जिस तरह मैं कहूँ sentence, so ये जो sentence है ये एक word है। We should come to our topic. What is a sentence? A sentence is the largest unit of any language. In English, it begins with a capital letter and ends with a full stop, or a question mark or an exclamation mark. तो जी सेंटेंस ये एक लार्जेस्ट यूनिट है किसी भी ज़ुबान का, किसी भी लैंग्वेज का, और सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म होता है फुल स्टॉप के साथ या क्वेश्चन मार्क के साथ या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. A group of words which makes a complete sentence is called sentence. A group of words that express a through mean complete idea by giving a statement order or asking a question or exclaiming. Example, जिस तरह मैंने ये sentences में कहा, उस ऊपर definition में कहा कि जी ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंबाइन हो जाए तो ये एक सेंटेंस फॉर्म करता है, लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस कैरी करता है, कंप्लीट थॉट कैरी करता है, एक सेंस कैरी करता है. और तो इसी तरह एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, हो सकता है, या कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है. जिस तरह मैंने ये नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ही इज़ ए गुड बॉय, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है. और उनके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज ही ए गुड बॉय, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन. और व्हाट अ नाइस वेदर, सो इट इज़ exclamation, got it? So I hope you would have got what is sentence and concept of sentence, that without sentence we cannot utter our language, we cannot speak. So for every language we need a sentence. They carry our thoughts, that carries our concept, that carries our information to other person. Now we would talk about what is types of sentence and इनके कितने types है according to function. We have two types of sentence according to meaning, and another one is structure. Like the function, like we say meaning, and structure like dependent and dependent, like those kind of sentence. So the first thing in the first type of sentence that we are going to do, there is according to function. According to function, the first sentence type that we get here, that is declarative sentence. So what is declarative sentence? Declarative sentence is also called assertive sentence. It simply expresses an opinion, feeling, or makes statements or describes things. In other words, it declares something. This type of sentence ends with a period or full stop. ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ये सिंपल आपका ओपिनियन कैरी करता है, आपका जो फीलिंग है ये कैरी करता है. जिस तरह सिंपल सेंटेंस हम कहते हैं ना, जिस तरह आई वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, सो ये एक स्टेटमेंट है. या आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी सैड टुडे. सो ये एक आम सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारा ओपिनियन या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. गॉट इट? इनके बाद हमारा दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का, वो है imperative. We use an imperative sentence to make a request or to give a command. Imperative sentence usually end with a period, a full stop.
but under certain circumstances it can end with a note of exclamation, exclamation mark. जी, अब imperative sentence क्या होता है? Imperative sentence simply ये request form करता है, command form करता है, order form करता है, और imperative sentence ज़्यादातर period full stop के साथ end होता है, या कुछ ऐसे हालत भी है, कुछ ऐसे circumstances भी है, कुछ ऐसे situations भी हैं जहाँ पर ये exclamation भी नोट के साथ एंड होते हैं. एक्सक्लेमेशन जिस तरह ये सेकंड सेंटेंस में मैंने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार दी हुई है. So there are two examples that I have given you. Please sit down. I need you to sit down. Close the door, shut the door, stand up. These kind of sentences are called imperative sentence. So the third type of sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence asks a question. Interrogative sentences must end with a note of interrogation, question mark. अब interrogative sentence क्या होता है? जो कि simply सवाल करता है. हम किसी से सवाल करते हैं ना कि जी आपका नाम क्या है, या आप कहीं या कभी मरी गए हुए हो, या क्या आपको इंग्लिश सेंटेंसेस आते हैं, या आपको इंग्लिश डू यू नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इट, लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जिस तरह मैंने वहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं. व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, डू यू नो हिम, yeah, what is your name? Those are something else, like we can say that those are WH questions, but here we are talking about the simple interrogative sentence. Just do you know, or do you have copy, do you have laptop, do you know about English, do you know about Urdu. So इस तरह के sentences को we call interrogative sentence. I hope you would have got this type also. If you are having problem in these kind of sentences, or the sentences that I explained to you, described to you, so you can easily ask me in the comment box. The last one sentence that we have, that is exclamatory sentence. What is actually exclamatory sentence? Exclamatory sentence expresses overflow of emotions. These emotions can be of happiness, wonder, sorrow, anger, etc. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सिंपली आपके ओवरफ्लो आप इमोशंस को मेंशन करते हैं, या जो इमोशन किस तरह के होते हैं, आप हैप्पी हो, आप सैड हो, आप वंडर हो, आप एंगर हो. सो उसी तरह सेंटेंसेस को ये फॉर्म करता है. ज़्यादातर इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं. जिस तरह मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, what a day it was, I cannot believe he would do that, मैं सलमान लिव लॉन्ग. सो इसी तरह सेंटेंसेस जब हम फॉर्म करते हैं तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किलात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर करवा सकते हैं. Inshallah, catch you with a next video. See you till that.